guys, it's Aditi Dubey. If you are new here, then welcome to my channel. And I know I haven't uploaded any video in like 4 to 5 months, I think, and I'm so sorry for that. Actually, I was in the middle of something, and मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस काम में बिजी थी. मैंने अपना खुद का सैलून स्टार्ट किया है इन होशंगाबाद. अगर आपको नहीं पता है कि होशंगाबाद कहाँ है, देन मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जगह है होशंगाबाद, वो मेरा होम टाउन है. एंड मैंने वहाँ खुद का सैलून स्टार्ट किया है. उसे सेट करने में ही मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं यूट्यूबिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी. बट नाउ आई एम बैक एंड आई ट्राई माई 100% कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाते जाऊं एंड पोस्ट करते रहूं, ताकि आपको भी कुछ हेल्प हो. बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब राइट नाउ. और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करिए. इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें. एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, देन डू फॉलो मी राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम. मेरा यूजर नेम है aditi.dubey_ एंड मैं लिंक भी आपको नीचे शेयर कर दूंगी. सो या, थैंक यू सो मच मेरी अब तक की बातें सुनने के लिए. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. For making a waterfall braid, take a small section of hair and divide it in 3 equal parts. Then bring the left section and cross it over to the middle section, and then bring the right section and cross it over to the middle section. Again, take the left section and cross it over to the middle section, and then take some hair and cross it over to the middle section. Take the right section and cross it over to the middle section, and then take some hair and cross it over to the middle section. Take the left section and cross it over to the middle section, and then take some hair and cross it over to the middle section. Now drop the right section and make a new right section from the back of that section and cross it over to the middle section. Now take the left section and cross it over to the middle section, and then take some hair and cross it over to the middle section. Again, take the right section and drop it. Now make a new right section from the back of that section and cross it over to the middle section. Then take the left section and cross it over to the middle section, and take some hair and cross it over to the middle section. Now drop the right section and make a new right section from the back of that section and cross it over to the middle section. Take the left section, cross it over to the middle section, and take some new hair and cross it over to the middle section. Drop the right section and make a new right section from the back of that section and cross it over to the middle section. Take the left section and cross it over to the middle section, and take some new hair and add it to the middle section. Drop the right section. When you reach the back of your head, then secure the braid with a bobby pin, and then hide the pin with some hair.
And that's it guys. Please like this video, share it, and if you are new to my channel then subscribe it and don't forget to hit the bell button. Thank you so much.